Hello friends, welcome समस्त को स्वागत आज important session रे welcome to this fantastic session my dear friends. अच्छा तो केते केते रो करिवारे 571 में भी ना 571 तो गुड मॉर्निंग प्रणाम प्रणाम समस्त को स्वागत वेलकम टू सुपर संडे सेशंस हो 571 रो आज हो ठीक अच्छे हो ठीक अच्छे आसी जा जल्दी जल्दी ओके तो देखो क्वेश्चन आसीगला स्क्रीन रे एबे स्टार्ट कर दियो हाउ विलंब नहीं इट इज सेड दैट ए टीचर शुड बी रिसोर्सफुल दिस मीन्स बोल्डर टी कॉफी आनी के आसिलेनी अरे बाप रे देखुच तो अवस्था कौन हेलानी 80 वर्ष बयस रे तमे माने सिना मते दबा कथा सीयूईटर आडमिट कार्ड पछरे कहीं एते पड़ीच से माने पूरा आराम से शोइछंती एबे से माने कहउछंती जे आमे तो सिटी कहि देइछु सिटी रे जाई के से माने बुलु थांतु आडमिट कार्ड देला परे सेंटर को जिवे हला it is said that a teacher should be resourceful this means that कौन हम देखो निश्चित रूपे सी हो निश्चित he should have enough knowledge so that he is able to solve the problems of his students मानकर problem को solve करिवा पई ability थिबो able थिबे in order to remove the feelings of disinterest and boredom during course of class teaching an able teacher केमिति जदि बोर लागुची सेटा क्लियर करि परिबे बा बोर्डम जदि आसुची बोरिंगनेस को दूर करि परिबे रिमूव करि परिबे छुआ मानक पाखरु चंदन कौन रे ओके आपण को 80 मु भाविली 18 19 हेतियो सही जहाँ भी हो एटा उल्टे की कहूँ एक्चुअली 80 को उल्टे की कहूँ माने 8 को राइट आंसर कौन है पुणी सी है क्रिएट सच सर्कमस्टेंसेस एज मे गिव एन अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू लाफ तो मजा आसवा दरकार मजा केतेबेले आसीबो जेतेबेले अपॉर्चुनिटी दबा मझिरे मझिरे हाँ खुश करदे दरकार हाँ मझिरे मझिरे चॉकलेट बिरयानी टिके हाँ चा टिके एमती दबा दरकार व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी ऑफ एजुकेशन प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी रो मीनिंग कौन हाँ सुन सेंसरी मोटर अच्छे बी हबनी पचारुछंती जे अच्छा बी कीप्स ऑन गिविंग सच जयफुल स्टेटमेंट्स एज मे मेक स्टूडेंट्स लाभ तो स्टेटमेंट कही एठी सच सर्कमस्टेंसेस माहौल माहौल आउ कथा देखो मु गोटे कथा कहली तुम हसीदेल मु पूरा गोटे माहौल बनैली जमती मनकर गोटे लाइन कहली तुम हसीदेल सरीगला जोक टाइप रो किंतु माहौल कौन काली जोटा होता बोल्डर आउ से जो कौन गुलुगुला दैट इज ए माहौल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी ऑफ एजुकेशन जेते पचारुछि आमे कोन करिबा स्टूडेंट्स आर फुल ऑफ एक्टिविटीज दे शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न बाय डूइंग द टीचर शुड रिमेन वेरी एक्टिव इन द क्लास
टीचर एक्टिव रहिले केवल हबनी केवल मु कहिछि ऑल सेते बेले हबो जते बेले इंडिपेंडेंटली स्टैंड करि पारुथिबो प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी कहले टीचर एक्टिव रहिबाटा को प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी कहबा कि एजुकेशन रे नॉट एट ऑल केबे भी नुहे एक्टिव स्टूडेंट शुड बी केप्ट बिजी इन वर्क एल्स दे बिकम इनडिसिप्लिन माने बिजी न रखिले से माने इनडिसिप्लिन हेई जिवे आ तांकु निहाती बिजी रखिबा दरकार एटा भाबिबा ठीक नुह प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी माने ऑप्शन बी करेक्ट नॉट डी देखो बांफ किछि बांफ नुह सब पूरा सुंदर माने सुलुसुलिया पवन टाइप रो किंतु तमे मानकर प्रकृति जोगु से बांफ भलिया तुमको फील होछि बुझिलो 574 बंगाली बाबा का चूरन हाँ देखो शिमला जाऊले केते सुंदर वाला कार रे हाँ बहती हवा सा था वो 3 इडियट्स मजा वाला पवन केते सुंदर पवन रे आराम से जीवा कथा हाँ केते सुंदर माहौल सुलुसुलिया पवन किंतु कौन तारी भितर पुणी हाँ बंगाली बाबा का चूरन खाई के छाड़ी देछि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन ऑफ एजुकेशन okay what is the meaning of principle of motivation of education 574 right answer is motivation creates interest among students motivation द्वारा कौन आसे इंटरेस्ट आसे प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन सापेंस मेमोरी दरकार नाही गिव्स एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स मोटिवेशन केमती एक्सपीरियंस तो ये केवल इंटरेस्ट ही क्रिएट करिवो एक्सपीरियंस तो कले ही मिलिबो लर्निंग बाय डूइंग हां स्टूडेंट कनेक्ट्स टू न्यू एक्सपीरियंस विथ ओल्ड वंस थ्रू मोटिवेशन ना प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट आसिला तापरे द प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एजुकेशन टेल्स अस टीचर शुड टेक इंटरेस्ट इन टीचिंग हिज स्टूडेंट्स teacher should inculcate interest for learning in the student the lives and career of student improved due to interest students do not take up that piece of work which with concentration in which they lack interest principle of interest कौन पुणी फास्ट टिके देखांतु कहबो जदि एठी नियो टीचर शुड टेक इंटरेस्ट इन टीचिंग हिज स्टूडेंट्स दरकार नहीं मोस्ट इंपोर्टेंट इज बी तुम मैंने जानी सारे द टीचर शुड इनकलकेट इंटरेस्ट फॉर लर्निंग रो इंटरेस्ट पढ़ा इंटरेस्ट स्टूडेंट भितर जनरेट कर प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन थिला तो इंटरेस्ट एटा मोटिवेशनटा हूँ इंटरेस्ट मोटिवेशन इंटरेस्ट सहित रिलेटेड आ इंटरेस्ट पुणी कौन आहरी इंटरेस्ट सहित रिलेटेड तो इंटरेस्ट जनरेट करवा गोटे बड़ जिनस बड़ काम कार टीचर कर टीचर डिसाइड्स व्हाट एंड हाउ मच शुड बी टॉट टू ए स्टूडेंट अंडर व्हिच प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन डज दिस एक्शन फॉलो अच्छा स्वाति एते कथा कहीं बात खत्म ऑप्शन बी लॉक्ड अच्छा देखो बात खत्म तमें तो करदेल जे तुम से माने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल रे पहुंची जाइछ मस्लो हिरार्ची रो आमे तो हाँ फिजियोलॉजिकल नीड रे ही अच्छू खाद्य टिके कोठू मिलिबो सेठी आमे अच्छू ओके द टीचर डिसाइड्स व्हाट एंड हाउ मच शुड बी टॉट टू ए स्टूडेंट अंडर व्हिच प्रिंसिपल सिलेक्शन सिलेक्ट करिवो डिसाइड करिवे प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ओके चलो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पचारची कोटा करेक्ट अच्छी द टीचर शुड कीप इन व्यू द डाइवर्सिटीज ऑफ स्टूडेंट्स व्हाइल टीचेस देम निश्चित टीचर शुड नॉट रिप्रिमेंड दोज स्टूडेंट्स हु आर स्लो लर्नर्स गाली करवानी जे स्लो लर्नर टीचर शुड अप्रोप्रिएटली गाइड एबल स्टूडेंट्स डी राइट प्लानिंग कहीं सिलेक्शन है व्हाट डिसाइड्स व्हाट एंड हाउ मच
ओके सिलेक्ट करिवो कोन पढ़ेइबो प्लानिंग टा हाउ प्लानिंग टा केवल हाउ केमिति हाउ मच माने केते केते हाउ मच आउ हाउ भीतर फरक अछि प्लानिंग रे हाउ ओके हाउ मच माने केते आउ कोन कोन सेटा होची सिलेक्शन सिलेक्ट करिवो बुझिगलो तो एटा सेमती ऑल हबो किंतु क्वेश्चन देखो केते चालाकी करिछि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट कहिछि अरे वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट काहे की कहिलु व्हिच इज ए करेक्ट स्टेटमेंट कहितले भी एक्चुअली एठी ठीक अछि जेहेतु डी ऑप्शन रे ऑल अछि ताले एठी वन नो मल्टीपल आंसर्स ऑल आर करेक्ट फर्स्ट सिलेक्ट करिवा तापर प्लानिंग स्वाति वेरी गुड Okay, during the course of class teaching, the teacher asks a question from his students. Which one is the correct method in this context? Five, 7, 8. Teacher asks a question from his students. Correct method kota. Question should be asked from all students. The rule of giving a turn to a student answer the question or ignoring a student is wrong in this context. केवल पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को पचारिबा आउ किछि स्टूडेंट्स को इग्नोर करिबा इज रॉन्ग while asking questions. Teacher should not repeat his questions in the class due to repetition of questions. Repeat कले questions कौन हबो Children start feeling nervousness तो आसीबनी process of thinking of child gets obstructed. अच्छा बार बार सेटा आछी children become casual or ignore about the question and they do not give attention to it when it is asked once again. So जदि बार बार पचारिबा सेही क्वेश्चन को ताहले से माने कोन करिवे अटेंशन ही देबेनी इग्नोर करिवे तो इट इज सी हबो नॉट ऑल फीलिंग नर्वस कहीं सही क्वेश्चन तो जना थिबा क्वेश्चन डू इट ड्यू टू रिपीटेशन क्वेश्चन नर्वस कहीं हम से क्वेश्चन तो से जानी आगर शुणी तो नर्वस कहीं हम 580 इफ ए स्टूडेंट नोज अबाउट द ताजमहल ही कैन बी टोल्ड अबाउट शाहजहां द टेक्निक ऑफ टीचिंग ऑफ जॉइनिंग द प्रीवियस नॉलेज विथ द न्यू नॉलेज इज कॉल्ड जानी इजीटा कर फटाफट फ्रॉम नोन टू अननोन इज द राइट आंसर जना रु अजना वेरी गुड व्हाइल टीचिंग ए टीचर गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स and teaches complex things fast simple things later due to this तो simple to complex न जाई कि से कोन करूछंती आग complex पढुछंती तापरे simple things को जणाउछंती या द्वारा कोन हबो पेड ग्रुप रे केमिति जॉइन हवा जो मानकर से रिलेटेड डाउट अछि व्हाट्सएप करो व्हाट्सएप करो ए नंबर रे डिटेल्स जानिबा पई अच्छा सिंपल टा परे आ आग कॉम्प्लेक्स टा जते बेले पढैले द स्टूडेंट वुड डेवलप डिसइंटरेस्ट इन हिज माइंड टुवर्ड्स द लेसन इंटरेस्ट आसीबो की इंटरेस्ट आसीबो टोटाली आसीबो नाही आसीबार चांस ही नाही तो जदि आमे प्रथमे सिंपल तापरे धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स आडी जिवा दैट इज द राइट वे
An example of the principle simple to complex is the following. कोटा गोटे एग्जांपल हो पारिबो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. First, the life story of Akbar, later his foreign policy. First, discussion the past, later discussion the present. First, the solar system, then sun and moon. First, UNESCO, later United Nations Organization. Answer is A. First, life story. प्रथमे अकबर को लाइफ स्टोरी जानिबा तापर तांकर फॉरेन पॉलिसी जानिबा. सो इट इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. बाकी सब कॉम्प्लेक्स टू सिंपल अछि. 583. फ्रेंड्स नेक्स्ट पेड क्लास बायोरो रहिबो बायोलॉजी रहिबो. मु कहीं टिके आज बुले बुले की करिवि जा द्वारा तम मानकु किछि किछि रिलैक्सेशन टाइम मिली पारिबो. नेक्स्ट पेड क्लास 10:30 रे. बी हबनी कि अच्छा पास्ट टा आग डिस्कस करिवो तापर प्रेजेंट टा डिस्कस कले हबनी. प्रेजेंट वर्तमान सिचुएशन टा सहित आग आमे जड़ित रे सिंपल होची वर्तमान. अतीत भी आम पई कॉम्प्लेक्स एंड फ्यूचर भी आम पई कॉम्प्लेक्स. बुझिला तो. नेक्स्ट पेड क्लास बायोलॉजी रो आप रे रहिबो और तापर टिके रिलैक्सेशन पाई परिबो. किंतु एठी भी सीयूईटी जो माने प्रिपेयर करछो बा माने सीयूईटी बीएड जो माने दबो से माने को जॉइन करबा को पड़िबो. A little child can identify a cow. You give him the knowledge about the use of the tail of the cow or its habit of lumination. Which one of the following denotes this technique? Little child can identify a cow. You give him the knowledge about the use of the tail of the cow or its habit of lumination. Which one of the following denotes this technique? Indefinite to definite. प्रथमे आइडेंटिफाई कले cow can identify. You give him knowledge about use of tail of the cow or its habit of lumination. तो ये होची indefinite to definite हो. You want to teach a language to a student. Which method would you consider to be interesting for students? कोटा इंटरेस्टिंग हम स्टूडेंट्स मान को लैंग्वेज पढ़ेबा को जाउच. वांट टू टीच लैंग्वेज. You would start teaching him from sentences. सेंटेंसेस रु पढ़ेवा स्टार्ट करवा. भावेल कन्सोनेंट नुहे भावेल परे आ ग्रामर परे प्रथमे सेंटेंस कहीं आमे जते बेले कथा कहूचे कौनसी डेफिनाइट मीनिंग आसीबा निहाती दरकार. ग्रामर परे जानू भावेल कौन परे जानू भावेल कन्सोनेंट भितर फरक परे करू. किंतु सेंटेंस मीनिंगफुल सेंटेंस आग स्टार्ट टीचिंग हिम फ्रॉम सेंटेंस इज मोस्ट इंपोर्टेंट. जोटा नॉर्मली आमे कन्वर्सेशन जेतेबेले करछे सेंटेंस यूज करछे तो से जेतेबेले जन्म होईछि छुआ कथा कहबा सिखला माने कोन आग यूज करबो सेंटेंस यूज करबो. से वावेल कन्सोनेंट जानिबो कि आग. The method of telling a general principle first and then confirming that the principle by giving the example. So principle to example. Example of that principle to students. Example को परे जीवो आग रूल प्रिंसिपल रूल टू एग्जाम्पल. कौन हम डिडक्टिव मेथड हम डिडक्टिव
ए हम राइट आंसर डिडक्टिव हम डिडक्टिव कौन जीडीएस मु कही जीडीएस माने कौन जनरल टू स्पेसिफिक प्रिंसिपल जोटा सेटा समस्त जनरल आउ एग्जांपल जोटा सेटा हमें स्पेसिफिक एग्जांपल दउचे सो जनरल टू स्पेसिफिक जते बेले जाउची ताको हमें कहउचे डिडक्टिव जीडीएस डिडक्टिव मेथड प्रिंसिपल होउची जनरल समस्त एप्लीकेबल किंतु एग्जांपल होउची स्पेसिफिक गोटे तार ऑपोजिट टा होउची इंडक्टिव स्पेसिफिक टू जनरल एसआईजी स्पेसिफिक रु जनरल हेले इंडक्टिव एग्जांपल टू प्रिंसिपल हेले इंडक्टिव while teaching through the inductive method first of all while teaching through the inductive method first of all इंडक्टिव मेथड तो एसआईजी हम तो कौन हम फास्ट कौन दिया हम एग्जांपल प्रथम दिया हम देन रूल इज मेड ऑन दैट बेसिस तो एग्जांपल रु जते बेले हमें रूल को गले सेटा कौन हम मुझे इंडक्टिव हम ना नहीं तो इंडक्टिव मेथड तो एग्जांपल प्रथमे तापरे रूल डन बहुत बढ़िया कर एनर्जेटिक वेरी फैंटास्टिक पार्टिसिपेशन शुरुआत बहुत बढ़िया होती देखा जाओ आगो कौन कौन करुच केमिति घांटुच आज पूरा सेशंस गुड़ी को 587 द टीचर वांट्स टू टेल द स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास द मीनिंग ऑफ द वर्ड फोल्ड ही शुड फोल्ड रो मीनिंग बतेवा पई कौन करबा उचित टेल स्टूडेंट्स दैट द वर्ड फोल्ड मीन्स टू बेंड fold a sheet of paper and show the students to explain how the paper folded. Tell students that the bent sheet of paper is not a fold, it is that place or mark where the paper has been folded. All of these. Fold a sheet of paper and show the students to explain how paper is folded. तो फोल्ड करदेला गोटे पेपर को अब एडिटे करदेला आउ स्टूडेंट को कहला एक्सप्लेन कर हाउ द पेपर इज फोल्डेड केमिति पेपर फोल्ड होला टेल स्टूडेंट्स दैट द बेंट शीट ऑफ पेपर इज नॉट ए फोल्ड एटा फोल्ड नुह इट इज दैट प्लेस और मार्क वेयर द पेपर इज बीइंग फोल्डेड ये हूँ से मार्कटा जो जगार फोल्डेड है सी राइट आंसर नॉट ऑल कहीं हेलानी टेल स्टूडेंट्स दैट द वर्ड फोल्ड मीन्स टू बेंड फोल्ड माने बेंड हो माने तल को नईबा जहाँ फोल्ड ताहा कि नुहे दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग एमतिया क्वेश्चन आसपे हाँ टिके एनालिसिस करने को पड़ो जोटि ऑप्शन सब धोखा देला टाइप रो भी थिबे व्हाइल टीचिंग ए लेसन ऑफ ज्योग्राफी द टीचर टेक्स द हेल्प ऑफ द कंपैरेटिव मेथड with this method students develop the quality of स्कीमा दोहली गला पूरा अच्छा सुमन कौन है गला धाकी टिकी एकदम से वक्त बदल दी अरे कुआड़ कुआड़ पाउच सब पशु कंपैरेटिव मेथड जिते कही कौन हम कंपेयर केते करवा हाँ भारी जोर डरिलणी किंतु ऑल को मु जहाँ देखुची एक्सपेरिमेंटेशन observation thinking all are correct when the teacher uses the comparative method while teaching then he should keep in mind for 2 point subjects items to be compared got compared
ठीक से कंपेयर होइछि ना नहीं से सब को पॉइंट माने व्हेन द टीचर यूजेस द कंपैरेटिव मेथड व्हाइल टीचिंग ही शुड कीप इन माइंड रे रखिबा दरकार फॉर 2 पॉइंट्स ऑब्जेक्ट्स आइटम्स टू बी कंपेयर्ड गॉट कंपेयर जहाँ को कंपेयर करिवो से दीटा जिंस को माइंड रे रखिले जाई कि कंपेयर करि पारिबो students should not have complete knowledge about them beforehand. Students should have complete knowledge about them beforehand. Student must have read something about those beforehand. There should be no study material about them. So निश्चित किछि जानिथिबा दरकार. Students must have read something about those beforehand. किछि जानिथिबा दरकार. Should have complete knowledge about them beforehand. तो complete knowledge जदि अछि और करिवा दरकार नहीं. Not have complete knowledge हेले भी हबनी. So must have read something. किछि जानिथिबा दरकार. After teaching through the comparative method, the teacher should. After teaching through the comparative method, the teacher should. बेस नहीं 600 जाए करवा आज 600 जाए करवा आ 10टा क्वेश्चन. After teaching through the comparative method, the teacher should. Get general rule or principle delineated from students on the basis of comparison. Solve the problem of his student on the basis of comparison. Conduct a question answer session on the basis of comparison. Dictate his experience on the basis of comparison. कौन होगा? कंपैरिजन करी कि हमें गोटे जनरल रूल बाहर करिबा ता कंपेयर करी कि जनरल रूल गोटे बाहर करिबा. ए इज द राइट आंसर. जो माने ए सहित अछ गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया. माने दीटा जिनस कंपेयर कले कंपेयर कला परे कंपैरेटिव मेथड टा स्टडी कला परे स्टूडेंट्स माननकठू गोटे रूल बाहर करिबा जे कंपैरिजन द्वारा कौन फरक अछि आ कौन या भीतर डिफरेंस रो गोटे रूल और प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करिबा जोटा आगरु देथिले सेठी रीच करि परिबा कंक्लूड करि परिबा. Who stated the best part of education of a student is the one that he himself has acquired? Who stated the best part of the education of a student is the one that he himself has acquired? कौन हो एटा वाल्टर स्कॉट में भी वाल्टर स्कॉट yes very good. A child is such a book as has to be read by teacher from the beginning to the end. This statement of Rousseau points to the fact that the center of education is the जना पड़ जाऊँ कौन कर आराम से. आज यूट्यूब रे को क्लास करवा को चाइल्ड इज द राइट आंसर. चाइल्ड इज द राइट आंसर. जीन टॉप हाउस स्कॉट. अच्छा पशु तमर कौन माने ये सब जिनस पशु मान कौन दरकार. 593 टेलिंग ए स्टोरी is a method of teaching. जीके क्लास दरकार. जीके क्लास अच्छा मिक्सअप ता माने कहूछ तो मिक्सअप आनिबा तो मिक्सअप. ओके
social science, general awareness, biology, science history, EVS। अच्छा हो, ओडिशा हिस्ट्री, हिस्ट्री जोग्राफी, पॉलिटी, इंग्लिश ग्रामर, ओडिया ग्रामर, आउ कौन अच्छे माने एबे मु भाबुची हो ठीक अच्छे। 593 telling a story is a method of teaching. Which one of the following is not correct in this context? There should be no expression of feeling, gesture, or acting while telling the story. Not correct कही ना, तो स्टोरी कहला बेले नो एक्सप्रेशन हेले मजा आसबनी। एक्सप्रेशन, फीलिंग, गेस्चर, हाँ टेलिंग, स्टोरी टेलिंग टाइम रे एक्टिंग सब प्रकार रहिले मजा आसो। तार गोटे मिक्सचर पकेट आनी देबे क्यूट रोजा कहउछंदी बास से मु जानि सारलेनी जे संस्कृत सर कहलेनी। हो स्पोर्ट्स, आर्ट, म्यूजिक ए रिलेटेड टिके आनंतु बास ये माने पूरा धरी छंदी एमती पूरा। हाँ 594 ओके। The question method of teaching is very useful. Through this method, the teacher can know सुशील सब बेले पॉसिबल होनी रे एबे खोजीवाटा माने टाइम वेस्ट टाइप रही जो। हाँ कमेंट्स में स्किप 594 all our right answer. Which one of the following question is problem oriented? Problem oriented. What are the cotton cloths made of? कोथरे तैयारी। मेन फूड ग्रेन क्रॉप्स ऑफ गुजरात कोटा। मराठा पॉलिसी ऑफ औरंगजेब कौन? प्रॉब्लम ओरिएंटेड होची ए। व्हाट वुड हैपन इफ ऑल वेजिटेशन ऑफ अर्थ वेयर डिस्ट्रॉयड? टोटल सब वेजिटेशन बा प्लांट्स जदि डिस्ट्रॉय हो जिवे अर्थ रु ताहले कौन हबो? While teaching a lesson, in which stage should the teacher ask maximum number of questions? B is the right answer, development stage. Which one of the following questions has a flaw? Sir, CUET B.Ed Arts ପାଇଁ एनवायरमेंट रिलेटेड सब गोटे करदवा संग मित्र। अच्छा फ्लॉ फ्लॉ माने पुणी कौन? माने त्रुटि त्रुटि एरर। एरर कोटी अछि। Was Lal Bahadur Shastri the Prime Minister of India? What is the staple food of inhabitants of Japan? What are the differences in weather of Maharashtra and Assam? Why Alexander the Great invaded India? ए सब अच्छी किंतु एठी डिफेक्ट अच्छी क्वेश्चन रे एरर अच्छी। एरर कौन? एमिति क्वेश्चन करा जाएनी। वाज लाल बहादुर शास्त्री द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? यस नो टाइप हेगला। अब आम लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहदेला बेलू आम जानी जा भी जड़े जानीज सहजरे हाँ यहाँ तो जनाशुना कथा लाल बहादुर शास्त्री तो थिले।
बुझी होची तो A is the right answer. Which scholar had stated the mental process of students should be awakened with questions? Raymond is the right answer. It's a memory based question. Teachers should keep in view the diversities of students while teaching them. The meaning of this statement is that कौन diversity? Teachers should keep in view the diversities of students while teaching them. The meaning of this statement is that he should take care of both intelligent and slow learners, should also take care of students of different age, should take care of the needs of both the committed and disinterested students. So सबको importance दबाको पड़िबो. 600 आज लास्ट क्वेश्चन. द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन इज रिवीजन कहीं करा जाए पेडागोजी भाइब्स वर्तमान सेसन लास्ट क्लास एटा टेलीग्राम रे अलर्ट रहो समस्ते टेलीग्राम लिंक देनी देखिलो एटा के तो कहिनो ना कहितलो आज तो टेलीग्राम देखो टेलीग्राम रे जो माने भी जॉइन करनो निश्चित रूपे जॉइन करि जाओ टेलीग्राम रे तुम माने सब जिंस सब क्लासेस रो डिटेल्स को पाई परिबो सो डू जॉइन एवरीवन इन टेलीग्राम चैनल एक्सप्लोरिंग गोल्स जो मैंने भी वर्तमान पर्यंत जॉइन करनो चैनल को जो मैंने सब्सक्राइब करनो निश्चित रूपे जिते शीघ्र पढ़ो सब्सक्राइब करनियो आउ क्लासेस नेक्स्ट क्लास विषय रे जानि परिबो टेलीग्राम रू ओके केते बेले रहिबो कोन रहिबो कौन आंसर क्वेश्चन नंबर 600 रिवीजन ऑफ एक्वायर्ड नॉलेज टू मेक इट परमानेंट यस फ्रेंड्स टेलीग्राम चैनल रो लिंक देइछि देखो टेलीग्राम चैनल रे समस्त जॉइन करो एवं सेठी तुम माने पाई परिबो डिटेल्स आ एप्लिकेशन रे जदि भी पेड कोर्स रे तमरो किछि प्रॉब्लम अछि जॉइन करिवारे ताले एप्लिकेशन किंतु इंस्टॉल करिकि रजिस्टर करिकि लॉगिन करिनियो काहे कि ना फ्री रे बहुत इंपोर्टेंट पीडीएफ्स मिलुछि पीडीएफ सब मिलुछि ओके ता सहित मॉक टेस्ट सब मिलुछि ये सब को अटेंड करो यार फायदा उठाओ एंड पेड कोर्स बहुत कम रे मिलुछि एक्चुअली बहुत कम पे करिकि तुम माने पेड कोर्स रे जॉइन करि परिबो 249 रे 4 मार्च पर्यंत बीएड पाई 399 रे टीचिंग एग्जाम्स टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड टीचिंग एग्जाम्स पाई 4 मास ड्यूरेशन 499 रे ओडिशा एजुकेशन सर्विस टीचर एजुकेटर नेट एग्जाम एमए एजुकेशन एमएड पाई तो निश्चित रूपे समस्ते जॉइन करो पेड कोर्स रे पूरा फायदा उठेवा पाई पेड कोर्स रे जॉइन करबा पाई किछि भी डिटेल्स जानिबा पाई 8917214900 एई नंबर रे व्हाट्सएप करबा को भूलिबानी एंड निश्चित रूपे जॉइन करो मॉक टेस्ट एटलिस्ट मॉक टेस्ट जेतिक अछि ना ताकू जदि प्रैक्टिस करबो तमरो बहुत ही फायदा मिलि जिवो पूरा अनलिमिटेड मॉक टेस्ट वर्तमान पाइबो सब टॉपिक रो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री जनरल अवेयरनेस एजुकेशन पेडागोजी रीजनिंग इंग्लिश सब जिनसर पाइबो प्रैक्टिस करबा पई थैंक यू समस्त निश्चित रूपे वीडियो को लाइक करो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स मान सहित भी शेयर करनबो एवं देखाबा 10:30 रे 10:30 रे एप्लिकेशन रे बायोलॉजी क्लास पेड क्लास रे समस्त निश्चित रूपे जॉइन करिवो टेक केयर कीप एक्सप्लोरिंग कीप लर्निंग जय जगन्नाथ।